Hello students, welcome to our ISI 2026 most probable conceptual questions series। एंड ISI में दो पेपर होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग पेपर होता है। मॉर्निंग में वो सिंगल करेक्ट आंसर्स होता है, मल्टीपल चॉइस। इसमें गलत करने से 0 मिलेगा। अगर हम लोग सॉल्व करके ये करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग राइट करते हैं, तो उसमें फुल मार्क मिलेगा। अगर इसमें छोड़ देंगे तो 1 मार्क मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लेकिन गलत करने से 0। अगर हम लोग स्मार्टली उसको छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करके छोड़ देते हैं, तो उसमें 1 मार्क मिलेगा। एंड इसका प्रोसेस भी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी के हिसाब से होता है। और उसका जो सेकेंड पेपर है दैट इज UGB। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। लॉन्ग मतलब रिटन पेपर, जैसे 99 98 में IIT JEE मेन में होता था। तो उस टाइम में इसमें 8 क्वेश्चंस होता है UGB में। सेकेंड पेपर जो शाम को होता है, और एक क्वेश्चंस वैल्यू इज 10 मार्क्स। ओके। सो आज के जमाने में, आज जो चल रहा है, तो जेई मेन हो या तुम दूसरा कोई क्वेश्चंस जैसे कि नीट का एग्जामिनेशन हो, सब में शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व होता है। बट ये जैसे कि मैथ के ऊपर फोकस स्टडी है, तो इसीलिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, और उसमें थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ता है, हाउ टू हैंडल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड्स एंड जैसे कि IMO, INMO एंड IOQM, सो उन लोगों को बहुत इजी भी लगता है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन को हैंडल करने से। तो मैं आज का जो क्वेश्चंस लिया हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट as well as chapters, it is the calculus. Let f of x equal to definite integration 0 to 1 t minus x modulus t dt for all real x. Sketch the graph of f of x and what is the minimum value of f of x. इसमें पहले इसको सॉल्व भी करना है, और इसका जो फंक्शंस है उसको फंक्शंस को निकालना है, और उसको ग्राफिंग करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू भी f ऑफ x का निकालना है। 3 स्टेजेस ऑफ द इस जो क्वेश्चंस में 3 स्टेजेस है। देन हाउ टू ट्रैक दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। We first need to find the explicit form of the functions. Note that the integration is with respect to t, because here it is t dt. Okay. So the integration is with respect to t, so that the limits on t are from 0 to 1, because it is definite integration 0 to 1. Now, depending upon whether x lies in, now I have to start the questions, how to write the question. It is a long question, 10 marks question, it will take some time also. Okay. और मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस को एक स्टूडेंट जो प्लेबैक स्पीड है उसमें 1.52 करके देख सकता है। पर जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसको डिटेल्स एंड नीट बीट कॉन्सेप्ट को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, दोज हु वर रियली प्रिपेयर्ड फॉर द ISI 2026। ओके। नाउ टी टी का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट इज इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी 0 to 1। बट नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्स, whether x lies in minus infinity to 0 or 0 to 1,
both are open, or 1 to infinity, it is 1 closed. Now we consider the point which is x is less than equal to 0. Then my f of x becomes integration of 0 to 1 e minus x t dt equal to integration of 0 to 1 t minus x. We have to remove the modulus t minus x into t dt. So now we proceed as the integration at it is the integration of 0 to 1. It is t square dt minus x into integration of 0 to 1. It is t dt. Now integrating the t square with respect to dt, it is should be t cube by 3, and it is 0 to 1 minus x into t square by 2 integration of t square by 2, it is 0 to 1. Now it is 1 by 3 minus 0, it is 1 by 3 minus it is 1 by 2, and x outside the x is there, so x by 2, x by 2. So my function is minus x by 2 plus 1 by 3. Then when the x lies in between 0 to 1, x lies in between 0 to 1. Now both x, now both x and t lies in the same interval. And so to decide the sign of t minus x, we need to break the intervals 0 1, further into 0 to x, it is closed, 0 open, and x to 1, it is x is closed, it is. Now my f of x becomes integration 0 to x t minus x modulus into t dt plus integration of x to 1, it is t minus x modulus t dt. So again it is integration of 0 to x, it is x minus t because it is negative, so x minus t times dt, t into dt, plus x to 1 t minus x, it is t dt. I'll show the intervals also, there is no problem. Okay, if anyone cannot understand, then after that I should show the intervals. And it is x integration of 0 to x t dt minus integration of 0 to x t square dt.
plus integration of x, it is x to t also. X to t is t square dt minus x into t square t dt. t dt. It is x to 1. X to 1. Okay. Now it is x into t square by 2. X into t square by 2. Its value is 0 to x. Its value is 0 to x minus t cube by 3, and its value is 0 to x plus t cube by 3. It is x to 1 minus it is x into t square by 2 integration of t. It is x to 1. Now we have to plug the values of in x. So it is x cube, it is x square, and x cube by 6 plus 1 by 3 minus x cube by 3 minus x by 2 plus x cube by 2 minus 2, then x cube by 6, x square by 2. So it is x cube by 3 minus x by 2 plus 1 by 3. Okay, this is my another functions that we get. Supposed to be when x is greater than equal to 1. Now where is the x and t lies? So supposed to be this is the number line. So here it is 1 and here it is 0. So this point to this point, this is t lies. Okay. So this point to this point, the t lies, and from here, okay, from here to onwards, this is x lies. Okay. So according to this, it should be positive or negative. Okay. Try to understand this point. Then my f of x equal to integration of 0 say 1. It is t minus x modulus with respect to t dt again. So it is integration of 0 say 1 and x minus t into t dt. Again we can integrate. So is x integration of 0 to 1 t dt minus integration of 0 say 1, it is t square dt. Now it is x into t square by 2 of 0 to 1 minus it is t square is t cube by 3 minus t cube by 3, which minus. Okay. So its value is 0 to 1. Again, it comes out to be x by 2 minus 1 by 3. Now, we have to summarize my functions. Okay. So, f of x equal to, so this is minus x by 2 plus 1 by 3. हम लोग पहले फंक्शन निकाले थे जो कि x is less than equal to 0 के लिए. Next, it is x cube by 3 minus x by 2 plus 1 by 3, where the interval should be 0 is less than x is less than 1. Then it is x by 2 minus 1 by 3, where x should be greater than equal to
1. So these are the functions. So now the function is continuous at x equal to 0 and x equal to 1. Okay. Now how to graph of these functions? Okay. Graph of these functions, first we have to find out the minimum value by using the calculus again derivatives. Okay, differentiation use करके देन हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा आसान होगा. The minimum value, then the third part of the equation, the minimum value. मिनिमम वैल्यू पहले निकाल देते हैं, फिर हम लोग ड्रॉ करने से के लिए ग्राफ इजी रहेगा. मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स occurs in 0, 1 because it is continuous in that point. As my f of x equal to y equal to x cube by 3 minus x by 2 plus 1 by 3. So when x lies in between 0 to 1, then dy by dx equal to 3x square by 3 minus 1 by 2, which is equal to x square minus 1 by 2. Okay. Now dy by dx vanishes 0. So then dy by dx equal to 0. We have to put the concepts actually. So x square minus 1 by 2 equal to 0. So x equal to plus minus root 2. So we have to choose only 1 by root 2 because it is lies in between 0 to 1 positive interval. So minus root 2 minus 1 by root 2 should be cancel out. Then second order derivative we have to check. This is second order derivative t square y by dx square equal to it is 2x. Thus at x equal to so d2y by dx square is positive at x equal to 1 by root 2. Obviously it is 1 by root 2. So it is root 2 is positive. So greater than 0 also. Now so this value should be put in the original functions. So y minimum should be y minimum occurs at x equal to 1 by root 2. Now y minimum equal to so x cube by 3 minus x by 2 plus 1 by 3. तो मिनिमम वैल्यू हम लोग फंक्शंस में ही डालेंगे एट x इक्वल टू 1 बाय रूट 2. लिख देता हूं इधर नो कंफ्यूजन के लिए. सो इट इज x by 6 whole into 2x square minus 3 plus 1 by 3 and it is should be 1 by put this value 1 by root 2. This is 1 by 6 root 2 whole into 2 into 1 by 2 क्योंकि 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2 आता है तो -3 so plus 1 by 3. So it is should be -2 by 6 root 2 plus 1 by 3. Now just we have to solve these problems numericals to get a fair answer. So -1 by 3 root 2 plus 1 by 3 equal to 1 by 3 whole into 1 minus 1 by root 2. So now 1 by 3 whole into 1 minus 1 by root 2 should less than 1 by 6 also. There is no problem. Now we have to draw the graph and we know the vertices should be given that x equal to 1 by root 2 and minimum value means y value. By putting the x value,
we get the y value. So now how to draw the graphs? So this is my x-axis, this is my y-axis. So graph is like this. Okay. Now here is the another point. It is x equal to 1. Okay. Now this point should be 1 comma 1 by 6. Okay. Try. And this is the sub point. It is 1 by root 2. So this x value is 1 by root 2. And now, so it is my origin. So this point should be 0 comma 1 by 3. And this is my graph of the y equal to minus x by 2 plus 1 by 3. This part of the graph. And this part of the graph should be y equal to x by 2 minus 1 by 3. Okay. Now, this part of the graph should be y equal to, it is now my function should be x cube by 3. So x cube by 3 minus x by 2 plus 1 by 3. And our point should be this point. So value of this point should be also minimum value is 1 by root 2. When we put this is 1 by 3 of 1 minus 1 by root 2. So this should be the points. So now we can draw the graph of this is the also this is y axis. Okay. And this is the y dash. And this is also x dash. ये क्वेश्चन जो है वो यूजीबी के लिए है. सेकेंड हाफ में ये क्वेश्चन आता है. 8 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स ईच. और ये क्वेश्चंस हम लोग 3 स्टेप में हम लोग डिवाइड किए. अगर तुम इसमें कुछ लिखते हो, कुछ 2 स्टेप्स कर दिया, मिनिमम वैल्यू निकाल दिए, इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ द ग्राफ्स देयर इज नो प्रॉब्लम. उसके लिए कुछ मार्क्स कट जाएगा. और प्रोसेस के हिसाब से ईच एंड एवरी स्टेप्स जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसके लिए तुमको मार्क मिल जाएगा. आज इट इज 10 मार्क, इट इज ए लेंथी क्वेश्चन. वो लेंथ ही लगेगा क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है. तो मिनिमम जितना सॉल्यूशन जरूरत होता है तो उसके लिए देना पड़ता है. मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे टाइप का नंबर थ्योरी से क्वेश्चंस, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस और कैलकुलस टाइप का क्वेश्चंस जो भी मोस्ट प्रोबेबल होता है 2026 का यूजीए एंड यूजीबी के लिए, तो मैं उसमें तुम लोगों को हेल्प करता रहूंगा. अनदर important request to all of you that should like the video and also share the video and also subscribe this video also our channel. Okay, thank you so much. Bye.